This today water fronts created because of the uh, when two contrasting air mass meet at a place, the frontal formation. So for the formation of the front, what is the condition which is required? The meeting of two contrasting air mass. Contrasting air mass means the physical property of that air mass must be different from each. One air mass, say for example, is the warm air mass. When meet with the cold air mass, so what we find? The differences in the physical properties, and in that case what we observe? We observe the formation of the front. So for the frontal formation, what I have said, what is required? The meeting of contrasting air mass. Contrasting means the air mass have characteristics or properties. Properties means they have the different or contrasting temperature, amount of humidity. Okay, so if the amount of humidity, temperature and the heat is different, in that situation when two air mass meets, we call that front. So in introduction I had discussed about the front. Then formation of front is known as frontogenesis. Genesis means origin. So how the front appears, as I have said, when the two contrasting air mass, contrasting means when physical properties different, meet at a place, front forms. Now front can be classified on the interaction of the air masses. Okay, and based on their activities and properties. Front can be classified as a stationary front, cold front, warm front and occluded front. When we called a stationary front, when two air mass meet but not trespassing each other area, दो एयर मास मिल रहे हैं और वहीं पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिस जगह पर वहीं पर क्या कर रहे हैं, दे आर स्किडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, then here one front is forms. That front is called a stationary fronts. So a stationary fronts में क्या कहा था कि when neither air mass is trying to occupy other, when the cold air mass and warm air mass meet, and if the cold air mass is not try to occupy the warm area and the warm air mass is not trying to occupy the cold area, then in that situation what kind of front forms? A stationary front से बना, इधर से वार्म एयर इधर से कोल्ड एयर, ये फ्रंट बन, that front is stationary in nature. Then I had discussed about what? The cold front and the warm front. When we called a front as a cold front, when the cold air mass is active, active means when the cold air mass, when we called cold air mass, जब सोर्स रीजन जहां एयर मास बनते हैं जिस सरफेस पर, उससे भी उस एयर मास का टेम्परेचर और लो हो तो हम उसे कोल्ड एयर मास, है ना. तो व्हेन द एयर मास इज मूविंग ऑन द सरफेस and the air mass temperature is low than this surface, then we called it cold air mass. So what, when the cold front forms, when the cold air mass which is moving is more active than the warm air mass which is moving towards the cold, when these two air mass meets, the cold air suddenly what, it push the warm air ahead, and here the vertical front forms. This front is called cold front. So cold front can be shown here like that. So what I have said, from here the cold air mass moving, cold air mass is active. It means the speed of this air mass more than the warm air mass, and when both the meet, here a front is formed. The front you can show like that, vertical. Why? Because the air suddenly rise, as a result of which a very high towering clouds forms. This cloud is called cumulonimbus cloud, and what we, heavy downpour. Okay, the heavy downpour for few hours, but that downpour led to the
flash flood. Thundering and lightning is also. So suddenly along the front, then what? The weather change. Okay. So because of frontal formation, what we find? Weather change. A question may appear in mains. Discuss the formation of fronts and associated weather phenomena. So you have to write. So, and what is the warm front? When the cold and warm air mass are moving towards each other, but in that situation, when the warm air is more active, not the cold air mass. When the warm air mass is more active, in that situation, what happened? In that situation, I had discussed with you people that what happened in that situation. Warm air जो है, अगर ये active है ज़्यादा, and cold air is moving from this way and warm air from this. Okay, what happened? The warm air started rising gradually, and this gentle slope created along the front. This front is called what? Warm front. So if you look at here, there is a warm air and the cold air. और फिर यह देखो यहाँ कोल्ड एयर के ऊपर वार्म एयर ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं. कल मैंने क्या बताया था? लेयर्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं, लेयर्स ऑफ क्लाउड. ओके, stratus cloud, nimbus cloud, altostratus, cirrostratus, cirrocumulus. The layers of clouds forms and drizzling. Initially the drizzling takes place and later the precipitation takes place, which is maybe heavier, but this drizzling and precipitation occur for few days, maybe for a week even. Continuously drizzling takes place in this region. And if you are standing here, what you find? Humid climate, because warm air is rising cold. So if you are standing close to the front, what you humidity and then precipitation. Atmosphere is humid. Okay. Now, so how we can represent the cold front? I have said that the cold front you can represent like that, and warm front you can represent. Okay. Now, when two air mass meet and started mixing, okay, to each other, when two air mass, the cold front and warm front forms, okay, and further the two air masses started mixing. तो फिजिकल प्रॉपर्टी मिक्स होने के बाद बदल जाती हैं. कोल्ड और वार्म एयर जब मिलने लगेंगे, और फ्रंट कब बनेगा? जब ये मिक्स नहीं होते हैं, उसके पहले फ्रंट बनते. जब एयर में मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर वार्म और कोल्ड एयर मास का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगेगा बिकॉज ऑफ मिक्स. दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्लूजन. व्हाट वी कॉल्ड occlusion. Occluded front forms. So here I have represented occluded front, cold and warm, cold and warm, cold and warm. Okay, so what you find? Occluded when the mixing stick. Okay, this is the cold front, this is the warm front, but when we called occlusion, when the mix. Okay, so occlusion हो गया, mixing हो गई air mass. जैसे ही ऑक्लूजन होता है, फ्रंट अब धीरे धीरे डिसअपीयर, वीक होने लगेंगे, क्योंकि फ्रंट बनने के लिए टेम्परेचर, हीट, ह्यूमिडिटी का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है. और अगर ये डिफरेंसेस जो है, ये अगर मिशिंग है, तो क्या होगा? धीरे धीरे फ्रंटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, फ्रंट ब्रेक होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे. तो ऑक्लूजन अगर स्टार्ट होता है, दिस इज द सिंबल that now the front started. Okay, ये symbol क्या है? The front started dissipating, front dissipate होने. ठीक है, यानी क्या होगा? उसका end होना होगा, frontolysis. अब occlusion are of various types. One is called neutral occlusion, another is called occlusion, and next warm occlusion. So when you look at this type of occlusion, so what we observe here,
what I have mentioned when we called neutral occlusion, कब कहेंगे? When there is no marked temperature difference between the air ahead of the original warm front and that behind the original cold front is called neutral occlusion. What does it mean? When we called this is the warm front, ये warm front है. ये warm front कब बना? जब cold air mass है और इस डायरेक्शन the cold air mass and warm air mass यहाँ होते हैं और ये ग्रेजुअली राइज करते हैं कोल्ड एयर के पास, तो ट्रोपोस्फेयर में ऐसा फ्रंट बनता है. ठीक है ना? तो ट्रोपोस्फेयर में ऐसे ये राइज करने लगी तो आप क्या देखोगे कि 4 to 6 किलोमीटर सरफेस से ऐसे फ्रंट बने अलोंग ये वार्म मॉइस्ट एयर राइज कर रही है, क्लाउड कॉन्डेंसेशन. तो अब क्या तुम्हें दिखाई देगा? क्या मैंने यहाँ लिखा व्हेन वी कॉल न्यूट्रल फ्रंट? लिखा है कि द मार्क टेम्परेचर डिफरेंस द एयर अहेड ऑफ ओरिजिनल वार्म फ्रंट. ये देखो, ये ओरिजिनल वार्म फ्रंट है, इसके अहेड ये कोल्ड फ्रंट. वार्म फ्रंट के आगे है ना कोल्ड एयर. ओके, तो क्या है वार्म फ्रंट एंड दैट बी, क्या लिखता है कि देयर इज नो मार्क्ड temperature difference between the air ahead of the original warm front and that behind the original cold front. It is called neutral occlusion. Say for example, यहाँ देखो, यहाँ देखो, look at this diagram. This part from here to here is cold front. Okay, ahead of this cold front in this region there is a warm air. यहाँ क्या है? warm air. Ahead to this cold front there is a warm air. Behind this cold front there is a cold dry air. Getting my point? Behind this cold is, जब भी कोल्ड फ्रंट बनेंगे तो कोल्ड फ्रंट कब बनते हैं? इधर कोल्ड एयर है वो ज़्यादा एक्टिव है, वार्म एयर इधर से आ रहे हैं वो कम एक्टिव है. कोल्ड एयर अचानक वार्म एयर को अपने ऊपर ऐसे सडनली क्या कर दिया? पुश कर दिया, है ना? यानी कोल्ड फ्रंट के पीछे क्या होंगे? कोल्ड एयर का, और कोल्ड फ्रंट के आगे क्या होगा? वार्म एयर. ध्यान में रखना, ऐसा कंडीशन हो. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कोल्ड एंड ड्राई एयर एंड कोल्ड फ्रंट के आगे वार्म. वार्म फ्रंट कब बनता है? वार्म फ्रंट कब बनता है? वार्म एयर इज मोर एक्टिव, कोल्ड एयर इज लेस एक्टिव. तो ओवर द कोल्ड एयर, for the cold air, the warm air started rising. वार्म फ्रंट बना तो वार्म फ्रंट के इधर कोल्ड एयर है और इधर क्या है? वार्म एयर है. वार्म फ्रंट बना के वार्म एयर है, यहाँ भी डायग्राम में देखिए आगे कोल्ड एयर है. अब न्यूट्रल ऑक्लूजन, और ये ऑक्लूजन यानी मिक्सिंग. हम कब इसमें न्यूट्रल वर्ड ऐड कर देंगे? कब हम इसमें कोल्ड वर्ड ऐड कर देंगे? कब हम वार्म वर्ड ऐड कर देंगे? आपको ये सीख. when we called it a neutral occlusion, when we called it cold occlusion, when we called it warm occlusion. सबसे पहले ये डायग्राम दिमाग में रख लो, ये बनाओ, पहले बना लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन. मेक दिस डायग्राम. ओके, मेक दिस डायग्राम. आइडेंटिफाई कोल्ड फ्रंट. ऐसे लाइन बनाकर इसके ऊपर ट्रायंगल बनाइए. ठीक है ना? यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए और ये बीच में लिखिए यहाँ वार्म एयर है, कोल्ड एयर है. ऑक्लूजन में ट्रायंगल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ऐसा ये ड्रॉ करना. देन आई विल एक्सप्लेन बेटर अंडरस्टैंड.
and write down. Yes, sir. Okay, finish. Now let's understand occlusion. And in this diagram, you must think when it is called neutral. एक और डायग्राम नीचे बनाना, जो कंडीशन बता रहा हूँ उसको लिखना है. सेम डायग्राम बनाइए. What you have made, सेम डायग्राम्स बना. अगेन तो डायग्राम अभी बनाया, सेम डायग्राम बनाओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या लिखना. लिखना मत, बस डायग्राम जो है, लाइन डायग्राम्स आपको बताने हैं. बट क्या लिखा है यहाँ कि when there is no marked temperature difference in the air ahead of original warm front. आपने जो वार्म फ्रंट बनाया है उसके आगे का जो एयर है वो क्या है, कोल्ड एयर था ना. के आगे कैसा एयर है दिखता है, वो जो एयर है कोल्ड एयर. और फिर लिखा है डैट बिहाइंड द ओरिजिनल कोल्ड फ्रंट. कोल्ड फ्रंट के पीछे भी जो एयर है वो क्या है, कोल्ड एयर है. आप देख रहे हो ना, आपने जो पहले डायग्राम बनाया है, कोल्ड फ्रंट के पीछे भी, बिहाइंड टू द कोल्ड फ्रंट देयर इज अ कोल्ड एयर, और अहेड ऑफ वार्म फ्रंट अगेन देयर इज अ. बोलता है कि दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ना हो दोनों एयर मास में, और उस कंडीशन में ऑक्लूजन होता हो, ऑक्लूजन का मतलब मिक्सिंग होती, तो हम उस ऑक्लूजन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ऑक्लूजन. आई क्लियर व्हाट आई हैव सेड, दैट when there is no temperature difference between the air which is behind the cold front and ahead the warm front. Okay, and then mixing means जो बनाओगे तुम सेमीसर, तो ऊपर वही बनाना है, ऑक्लूजन ही बनाना है, सेम डायग्राम जैसे ऊपर में आपने बनाया. बट मिक्सिंग कब कहलाती है, व्हेन द cold air which is existed behind the cold front and in front of the warm front, when these air masses having no marked temperature difference, उनमें ऑलमोस्ट टेम्परेचर सिमिलर हो, ठीक है ना, तब हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ऑक्लूजन कहेंगे. माई क्लियर, व्हेन वी कॉल न्यूट्रल ऑक्लूजन. ओके, तो नाउ इट मीन्स व्हाट आई हैव सेड. ऐसे आप दिखा सकते हैं डायग्राम. So here you have drawn cold front